अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे और अपनी अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में भी आपसे वादा किया था कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँगा, बट कुछ हालात और कुछ वाक़यात जो हैं वो इस कंसिस्टेंसी के दरमियान जो आ जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो कि वीडियो देख रहे हैं एंड एवरी सिंगल ह्यूमन इन पाकिस्तान, क्योंकि ना एक बहुत बड़ी खबर है, हम सब के लिए अच्छी न्यूज़ है कि अमेज़ॉन के ऊपर अब पाकिस्तान जो है वो अप्रूव्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आ चुका है। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर दोज जो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम जो है वो मंथली जो है इस चीज़ से कमा रहे हैं। और मेरे जैसे और आप लोगों जैसों के लिए जो कि अभी तक ई कॉमर्स की दुनिया से इतना वाकिफ़ नहीं, हमारे लिए ये एक मोटिवेशन की बात है कि हम भी इस अमेज़ॉन के ऊपर आकर अपनी मनपसंद सर्विसेज प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उसी के से रिलेटेड जो है आज मैंने कहा कि एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो प्रोसेस शेयर करूँ, क्योंकि दैट्स माय फर्स्ट टाइम एज वेल। तो देखते हैं कि हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमें अपलोड करनी पड़ेंगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, हम वाकई में अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एज अ न्यू भी खुद आपके साथ जो है अमेज़ॉन का अकाउंट जो है क्रिएट करूँगा। ऑल राइट जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने अकाउंट की क्रिएशन की तरफ। तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। एंड अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, आई एम न्यू भी, मुझे कुछ पता नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट। तो गूगल पे जाते हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड एंड अमेज़ॉन सेलर, लेट्स टाइप। सो पहला जो ऑप्शन हमें शो आता है वो सेलर सेंट्रल का है। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास बिकम एन अमेज़ॉन सेलर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। लॉगिन है, साइन अप है, तो लेट्स गो फॉर अ साइन अप। तो जी हमारे पास है क्रिएट न्यू अमेज़ॉन अकाउंट, तो न्यू अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो माय नेम, ओके जी, सबसे आसान सवाल, माय ईमेल, पासवर्ड, ओके जी, री एंटर, सॉरी, तो लेट्स ट्राई। ओके जी, पासवर्ड में थोड़ा सा इशू था, मैं दोबारा टाइप कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई दिस। ऑल राइट जी, तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो कह दें कि जी के आपके ईमेल पर जो है कोड रिसीव होगा। सो लेट्स वेट के देखते हैं हमारे पास कोड रिसीव होता है या नहीं होता। ऑल राइट जी, तो कोड मेरे पास यहाँ पर रिसीव हो गया है। मैं यहाँ से, सॉरी, तो कोड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। ऑल राइट जी, तो अभी हमारे पास नए ऑप्शन आए हैं जिसमें लिखा है बिफोर स्टार्टिंग प्लीज इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। ऑल राइट, सो लेट्स सेलेक्ट अ कंट्री। Okay, जी. So that's the thing. Pakistan is in the sellers account list. पाकिस्तान को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं जी कर लेता हूँ, I'm an individual. Please ensure your business type selection is individual sells in private context. An individual does not sell a product to a company, a charity, and does not operate in a business or professional context. So ठीक है जी, मैं individual पे करता हूँ। So let's say this, and uh, let's agree. ओके जी, हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पर।
Country again, Pakistan. Uh, Pakistan. All right, G S me and this. और राइट जी, पासपोर्ट का नंबर, तो मैं पासपोर्ट का नंबर डाल देते हैं. वेयर इज माई पासपोर्ट. तो पासपोर्ट डाल देते हैं जी हम. तो ये डाल दिया जी पासपोर्ट. एक्सपायरी इसकी डाल देते हैं जी हम. कंट्री ऑफ इशू हम सेलेक्ट कर देते हैं. जी जिप कोड डाल देते हैं. डबल चेक कर लेता हूँ स्टेट. और बाकी एड्रेस आ गया. ओके जी, रिसीव पिन थ्रू SMS और कॉल. तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ. एंड इंग्लिश सेंड SMS. दैट्स इट जी, कि आप ईमेल तो हमें आ गई थी, अब SMS का क्या हिसाब होता है. एंड हियर आई गो, आई रिसीव्ड एन SMS. माय पिन कोड इज this. Verify. Verification successfully complete. Next. All right जी, now the tricky part. ये वो पार्ट है जी जिसके ऊपर सारे पीछे हो जाते हैं मेजॉरिटी. You will be charged a monthly professional selling subscription fee of 39 USD for the first 6 months, starting with the seventh month. You will be charged professional selling global salary that will combine all the market knocks, see the total equal to 39. No matter what you are selling. For information, see this page. All right, तो रिस्क लेने में ही, रिस्क में ही बरकत है. तो लेट्स गो. और एक्सपायर डाल देते हैं हम. this this okay. Next. All right G, so the next name is store name. So why not G, why not? Double A Creations. Do you have a universal product code UPS for all the products? इसके बारे में हम देख. Do you have your UPC for all the products? Are you the manufacturer or the brand owner or the agent or representative of the brand for any product you want to sell and sell? Yes. Do you own a government registered trademark for the branded? No. Do you have universal product codes? तो जो चीज़ की आपको समझना है, मेरी टिप ये है कि उसको गूगल कर लिया करें. So no, I don't have it. Next. Oops, that is not available. Double A Creations. ओके जी, तो अगर हम डबल ए क्रिएशंस डाल दें. What about this? It's available. What about double A creation? Not available. Uh, okay, I like this. Let's go with it. Some more weight.
All right, it's loading again. Okay, 3 steps clear. So I'm the sole owner or point of contact of this account. Yes, this. Okay, gee, they are asking for my passport. All right. All right, gee, so my passport is uploaded. Business center, additional tools, any document, bank statements. Oops, so this is the tricky part. Uh, Additionally, I have it. So let's see. So all my information. Let's go for submit. I'm excited. Okay, gee, so thank you for sharing your information. Please wait while we process your information. This may take up to 60 seconds. All right, so this icon is loading on. नीचे information है तो हाइड कर देते हैं. Let's wait and see कि लोडिंग क्या होती है. कोई एरर तो नहीं आता हमारे पास. All right, G. So we have received your information and may reach up to you for the further clarification within 2 business days. All right, G. So that's quite impressive. I'm happy. Uh, that's a indeed that's a very big moment for all of us के at least अब हम ना हमें कोई चाचू मामू तायो की ज़रूरत नहीं है जो कि हम यूके यूएस बेस्ड उनकी इंफॉर्मेशन पे अकाउंट बनाते थे and all the process that we used to take off for this making this Amazon account. So this was all the process initially process जो आप लोग भी कर सकते हैं. You can put on your information. आई गेस उसमें आपको और मुझे कोई मैंने अपनी कर दी अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन. Yes, you will be needing your bank statements and the e-copies of either your passport or if you are applying from your national identity card तो front back both आपको चाहिए होंगी. तो that was all. तो कोई ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हुई. लेट्स सी जो भी ईमेल अभी आएगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए आई गेस दिस वाज मोर देन इनफ एंड वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के किस तरीके से आप अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने की जद्दोजहद स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.